Committee for Professional Grooming, Matri College. It's my proud privilege to welcome our esteemed speaker, Professor Bal Ram, and I also welcome all our dear participants and faculty members. Before we start with today's talk, I would request Professor Singh, Principal Ma'am, and other members of the organizing committee to kindly light the lamp. I now request Principal Ma'am and Sir to kindly raise the dais. Matri College, established in the year 1967, is a premier women's college named after the Vedic scholar Matri, who chose knowledge over wealth. At Matri, we strive relentlessly towards the holistic growth of all its stakeholders. While science is the necessity for all, so is the philosophy of life. There is an urgent need to look at science from the other perspectives. CFR engages students from all disciplines to explore the realms of knowledge every year and benefit by interacting with renowned scientists, philosophers, and academicians on various platforms. Today, we are fortunate to have with us Professor Bal Ram, a renowned biochemist, President of the Institute of Advanced Sciences, Dartmouth, USA, and the Director of Botulinum Research Center at Dartmouth. Sir did his graduation from Awadh University, post-graduation from Jawaharlal Nehru University, and PhD from Texas Tech University. He has been a professor at the University of Massachusetts, Dartmouth from 1990 to 2014, and currently he is professor at the Institute of Advanced Sciences. He has published 15 books, more than 350 articles, and has 9 patents to his credit. He has more than 100 honors and awards at universities in India and abroad to his credit. He is holding currently prestigious positions in many organizations such as Maryada Foundation USA, Abhas Foundation USA, JNU, and others. He has delivered many invited talks at international and national conferences, symposiums, and seminars. Dr. Singh has received more than 25 million in research funding from various federal and state agencies, corporations, and foundations for the past 32 years of his research career. He has been a consultant to several national and international biotech, biopharma, and legal companies. Professor Singh also serves on the boards of directors of several academic bodies like World Association of Vedic Studies, WAVES, USA,
Center for Excellence in Integrative Medicine, Boston, etc. He is currently the owner or co-owner of 4 different corporations, 2 in USA, 1 in Europe and 1 in India. Because of his tremendous work, he has also been highlighted in media on the news like NBC News, Fox News, Doordarshan, DD News, Lok Sabha, etc. Many more. He has started also a news media channel of his own, that is TCN Productions, and where he makes documentaries featuring inspirational stories of common man's success throughout the world. So there is a lot more in his CV, but we are bound by the time, so I am not able to read all of it. So after this brief introduction, I now request Principal Ma'am to formally welcome Professor Singh. Thank you so much, ma'am. I now request our ever supporting and ever encouraging Principal Ma'am to address the gathering. Thank you, dear Meena, for inviting me, and a very good morning to one and all present in this hall. And on the behalf of Maitrey family, I extend a very warm welcome to Professor Bal Ram Singh ji for accepting our invite and for being with us. I know a lot has been discussed about Sir by Dr. Meena, and I'm sure our students must be wondering, starting from research to even making few movie scripts, running so many corporates. Sir must be having more than 24 hours in a day. I'm sure, because and maybe this is as we were in the committee room and we were discussing, Sir is from Ayodhya, right? And Ayodhya is a nagari where तो ही कैन डू मल्टीटास्किंग. तो सर के पास में पहले ही इतनी भुजाएं हैं क्योंकि वो भगवान की जन्मभूमि से आए हैं, तो वहाँ से सब कुछ साथ साथ करते हैं. एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर that when sir was doing these things, and maybe one thing which Dr. Meena has missed is that besides doing all these things, I know that all of you must be knowing that the college publishes one journal which is Vantage Journal of Thematic Analysis, and sir is the member, he is in the editorial board of our college journal. So though he belongs to US, Europe, because he is having his companies at so many places, but he is very much part of Maitrey because he is part of the journal which is being released by the college half yearly. We release 2 issues, and it is for the past 3 years the college has been publishing this journal, and the purpose of publishing this journal is to promote research. And when the students, because research which is evolving around one theme, and many of you might, if you are from 2nd and 3rd year, you must be knowing that every year the center comes up with the theme where the students generally come up with their research projects during the summers. Very shortly, in a maybe by a fortnight, we would be releasing the theme for this year also, and that theme would become the theme for the journal also. So everything is linked, and sir is a part of that journal. So thank you so much, sir, for being with us. And I wish to apprise you that because for the past 3 years we have been releasing, and every year the publications, because so many articles that are being published are original articles and they are receiving citations also, and this year we are planning to get it listed in the UGC care list. So initiated steps have been taken, and we are sure that we would be able to do that, and that is the first step.
And then maybe after a year or so, we would be applying for the Scopus, for the indexing in the Scopus also. So we have long vision, and I am sure that your support would always be there and you would be guiding us. And today when we are sitting here, maybe because you might have been hearing me for so many times, and today you might be more interested in listening to Sir. So just a few words which I would like to state here now, because maybe when we are sitting here together in a closed room without wearing mask, right? And maybe about 2 years back, when we were in 20, maybe mid of 2020s or 2021, it was just like a distant dream that we will be again meeting up, sitting together, but we could do that, right? And because even nowadays you hear a lot in the social media, on TV channels also, that again the COVID has come up in big way in China and other countries. But even if India is densely populated, we have been able to manage ourselves. And why we have been able to manage ourselves, maybe we might not have thought on those lines, but a lot will say that the credit goes to the environment where we live in, right? We say that there is so much of dust all around, it is so polluting, but still we have good immunity levels, and that is why we have been able to sustain ourselves. And when we say maybe because the family culture, the way we live, the way the focus is laid on different activities, many of you, even at home, you must have seen your parents doing yoga in the morning, or your grandfather going for morning walks. So these are the small things which have become a very essential component. And more important thing is that in India, even today, when we talk about taking care of our health, we don't simply go by the conventional, we don't simply go by the conventional methods. Conventional methods is, if you are having a, maybe we'll say that if you are having fever, you will take a crocin and you will say that I have taken paracetamol, I am okay. But in India, in many of the households today, even the practice is, if you are down with fever, having cold or cough or something like that, the first thing you do is that your mother will prepare a kada which comprises of tulsi, she will add some ginger to it. So what happens is, we are not going only with the conventional methods, but we also incorporate the complementary methods. And this not only includes what we eat, but it also involves different ways. Maybe we do meditation, we do yoga, and that is why the concept, maybe many of you might not be using this terminology, but nowadays we talk about integrated health. So integrated health is when we are talking about both conventional and complementary methods going hand in hand. We are doing the proper coordination of the same, and this is very important for the overall health. And in fact, health has also taken a new domain. Health is not only confined to treating a disease, but we also talk about health as, where we are talking about our mental health, we are talking about our social health, we also talk about how our environment is. So even the environmental health becomes important. So when all these things are important, these things are happening, and we in India have been practicing these things for the past so many years. And the same thing has now taken up, it has been absorbed by the other Western countries also. And how it has shaped up, maybe I'll stop here, and now I will invite Professor Bal Ram Singh to discuss at length and apprise our students about these concepts and how it can be beneficial and how they all can work on their health, their mental well-being while being working, and how are they able to maintain, sustain the stress, and we can say that they can work on their endurance. Thank you so much. And thank you, sir, for being with us, and thank you all for joining. And thank you so much, ma'am.
And thank you for informing the audience that sir is there with us, guiding us in the editorial board of Vantage. And we are also thankful that he has very kindly agreed to contribute an article for our upcoming April 2023 issue of the journal. That will really boost up our morale. Thank you so much. Now I invite sir to take over. Wonderful. Good morning. Thank you very much, Dr. Yadav, Professor Chopra. It's so nice to hear so many good things. Everybody feels like that. There is some points that I am from Ayodhya, and that's where everybody just Jai Sri Ram. Actually, I am not very religious person. I do believe in Ram, but differently. I don't do any puja. But one thing is true, that whenever I get in trouble, I remember Ram. Not for any help, but as a example of who could be much worse than I am. So when I remember Ram, I have never found anybody in more trouble than Ram in his life. He was a prince. He was kicked out of the house. I've never been kicked out of the house. So, and then he had to deal with. He was not even allowed to go to villages. He was not allowed to ask for alms. He was just supposed to be only in the jungle. And the jungle is full of rakshasas and all kind of animals and everything. So I really find that whenever I get in any trouble, just remember that part. I'm better off than he was. And then he dealt with it very, very well. And Professor Chopra also talked about pandemic that created so much panic. It created panic in me also at that time. And then, there is a very different kind of expression that comes to you. It's like we don't know what will happen. So the reason I picked up this book from my bag is that I ended up writing a book which is going to be released maybe in a couple of days in JNU. It's called Madhusala. The title of the book is Madhusala. Maybe some of you have read it. Madhusala, that is Harivansh Rai Bachchan's Madhusala. I got inspiration from him because those days something came in April of 2020, which is when the pandemic started. And then I saw Amitabh Bachchan singing at Madhusala. I clicked on it, then I found it was written by his father. I had seen Madhusala when I was in 8th grade. I was in the Antakshari team, and we were supposed to... I was supposed to read, we were preparing ourselves with poems that will be high class, so that even if other team can not be defeated by not remembering, but our class of poems will be good. And so Madhusala was one of them. And Haldi Ghati, the other one, and Kamaini, the third one, that we remembered all, every letter. And I gave up on Madhusala because मुझे लगा ये पीने पिलाने वाली बात है, ये दारू सारू पीने वाली बात मैं क्यों याद करूं? So I had not picked up on this. But when I read about Harivansh Rai Bachchan, it turned out that he never drank. He was a traveler. He never drank. And also he wrote Madhusala when India was going for independence. India's independence struggle was going on. So, this is like a pandemic. I got into pandemic, so I got encouraged. And then I did some more research. Actually, that Madhusala was not his first book. He had written another Madhusala called Umar Khayyam's Madhusala. And Umar Khayyam's Madhusala was really a translation of a book written by Fitzgerald. It was called Drunkard House. So he just translated it. And then I found out that the Drunkard House was a translation of a Persian author whose name was Umar Khayyam. And he was an astronomer. And he was also not drinking, ever. And he wrote when the Islam invaded Persia, that you couldn't say much. So this is an expression. Madhusala, if you पी लेते हैं लोग तो कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है? तो ये मुझे याद आया कि मैंने इसको 2-3 महीने में लिखा और इसमें कॉलेज के बारे में लिखा हुआ है, प्रकृति के बारे में लिखा, जो मुझे समझ में आ रहा था उस समय, कोरोना के बारे में भी लिखा हुआ है. The last point I want to say before I want to go to my slides.
इधर बैठ जाओ ना आप, इधर बैठ, आराम से बैठ जाओ आराम से। मैंने योगा की बात करी, मुझे योगा एकदम पसंद नहीं था। मुझे 30 सेकंड, मैं जब कहीं भी जाता था, कोई बुलाता तो मैं तकिया लेके लेट जाता था। 30 सेकंड मुझे अगर वो पद्मासन में बैठना पड़े, पद्मासन तो बहुत बड़ी, जो सुखासन में भी 30 सेकंड मुझे सुखासन बड़ा मुश्किल होता था। पहली बार किसी ने हमसे योगा सीखने के लिए बोला, मैं जा ही नहीं रहा। वो मेरी वाइफ को कन्विंस किए, अरे उनको बोली एक दिन तो चले हैं। मैं एक दिन गया, उसके बाद फिर he was happy to explain all my question। मैं सोचता था बाबा लोग योगा करते हैं, नाक पकड़ के बैठते हैं, मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे क्या लेना देना। I turned out that now I consider yoga as a science। Today I am speaking। One more anecdote। I have a student, now she graduated, Guncha Amrin। There is a colleague, right? Guncha Amrin colleague here। Guncha Amrin asked me once, there she is, ये करवा चौथ, क्योंकि लड़कियां हैं यहाँ पे, तो बोली करवा चौथ औरतें क्यों मनाती हैं, महिलाएं क्यों करती हैं, पुरुष भी, हस्बैंड को भी करना चाहिए करवा चौथ। तो मैंने कहा है मेरी वाइफ ने तो कभी करवा चौथ किया नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इस पर रिसर्च कर सकता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करवा चौथ का मतलब वो तो बहाना है, या फिर आपने बोला ना बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में, बहुत सारी परंपराएं हैं, काढ़ा पीने की परंपराएं, तुलसी रखने की परंपराएं हैं, तो बहुत सारी ऐसी हमारे बिहेवियर की परंपराएं हैं, और उसमें बहुत सारे में साइंस है। तो तुलसी वाला तो ये है कि अभी जस्ट रिसीव्ड पेटेंट ऑन तुलसी 2 months ago, कि तुलसी से कैंसर कैसे ठीक होता है, और वी आर गोइंग टू प्रमोट इट मे बी इन अदर 4-5 months। अभी कुछ क्लेम नहीं मिले थे, कुछ का मिल गया है, तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू गेट दोज, जो कि मैं समझता ही नहीं था वैसी परंपराओं को। और दूसरा ये कि जो मैं ये कह रहा हूँ करवा चौथ, तो वो लड़कियाँ महिलाएं ज़्यादा करती हैं, बहुत सारे व्रत भी महिलाएं ही ज़्यादा करती हैं, पुरुष करते हैं, मैंने कभी व्रत नहीं किया। अभी हाल में मैंने एक दिन 36 आवर बिन्ने राजल मैंने भी करके देखा कि क्या फीलिंग होती होगी। I did 36 hours without any water, just to have the experience, but otherwise I don't do व्रत। I found in my research there is a phenomenon, those of you who are in biology might know, there is a phenomenon, otherwise also you will understand, autophagy। Autophagy मतलब अपने खाना। We have autophagy in everybody's body has autophagy, it works as a clean up system, you know, जो भी catabolism, anabolism में जो भी बाई प्रोडक्ट हैं, it gets cleaned up। ये मुझे ताजुब लगा कि पुरुषों की ऑटोफेजी महिलाओं की ऑटोफेजी से ऑटोमेटिकली नेचुरली डबल होती है। और जो व्रत करते हैं उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। किसी जापानीज वैज्ञानिक को उससे ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर इट। इंटरमिटेंट फास्टिंग इंक्रीजेज ऑटोफेजी। तो दिस इज, ये ढकोसला नहीं है, ये दिस इज काइंड ऑफ साइंस इन प्रैक्टिस, हम अपने जीवन में करते हैं। तो अब ये गुंचा इज अ साइंटिस्ट एंड शी डिडंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस, बट व्हेन आई सेंट हर आफ्टर माय रिसर्च आई रोट रिपोर्ट। नॉर्मली स्टूडेंट्स राइट रिपोर्ट फॉर प्रोफेसर्स, but I feel very privileged to have students who ask such questions, and so students are the biggest asset of knowledge for professors, believe it or not, because हम लोग तो सोचते हैं हमको तो पता है, फिर हम अपना सवाल नहीं पूछते, सवाल तो स्टूडेंट पूछते हैं, और अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो प्रोफेसर ज़्यादा सीखता है। ऐसा दैट्स हाउ आई थॉट। और हमारे लैब में जितने स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है, एक दिन मैं अपने ग्रुप में बोल रहा था कि भाई सारे करीब 100 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे अमेरिका में हाई स्कूल से ही रिसर्च करते हैं लोग। अंडर ग्रेजुएट वाले बहुत सारे करते हैं, हमारे कई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की पब्लिकेशंस हैं एंड दे गॉट अवार्ड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो, दे वेल अकम्प्लिश्ड। अगर all the students combined, they don't have each other's email, only I have. So, but if they all join and say that every mistake that we made in your lab, we would like to get it back, and I don't want you to ever use it, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। मैं क्यों? I learned all the things from their mistakes. मैं बड़ा प्रोफेसर बन के घूमता भी क्या, they made mistakes and I said no, don't do that. Here is a smart way to do it. So students should be very
much encouraged, and they should be prepared. You should be very curious, you should be very motivated, whatever you want to do. And if you are in college to study sociology, philosophy, chemistry, physics, whatever it is, have passion for it. And passion will demonstrate when you ask questions, the kind of questions. Recently, I taught a course in JNU, Science and Technology of Ayurveda. The final exam was not question, it was answer. I gave them 39 pages of answers, and I asked them to pose questions. That was their final exam. Why? They had to read and understand and ask some unique questions. If every student can do that, take the answers and see what questions you can come up with. That will take you much farther than if I ask you a question, you give me the answers. So with that, I would like to, from here we can start. I want to have this flow chart. I found it online maybe 10 years ago. It says problem resolution. Is it working? If yes, don't mess with it. Did you mess with it? Yes, you idiot. If something is working, anyone else knows? No? Okay, hide it. And if yes, then you are screwed. Yes. Did you mess with it? No? Will it blow up in your hands? Look the other way. And that is no problem. Many times we don't follow, we don't really look into the problem deeply. We just figure it out somehow. काम चल रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं है. This happens now in India a lot more than before, because our sages and rishis, they were scientists in a way. They were not looking for funding. They were not looking for publication. That's why you don't see many of the names who wrote what. And many times they had collection of experiences. Many times the Upanishads are created because of the dialogue between the teacher and the student. The student cannot just ask simple questions. They have to ask some deep questions so that the teacher will bring some new ideas will come. And that all comes from experience. And yoga is one of those type of things. So here is integrative health. Just brief introduction. Integrative health includes lifestyle. Professor Chopra talked about that, how the lifestyle is important, environment is important, food is important, even dress is important. And I made a mistake today, I did not come in kurta pajama, that's why he had that thing for me. I normally have kurta pajama or kurta dhoti also. In the University of Massachusetts, I used to walk in kurta dhoti. And with that, I have better feeling about what ladies go through with saris. Because when you have to climb up, you have to hold on to your... So, you become more aware of your body. With the dress, इंडिया का ड्रेस ऐसे नहीं बन गया है. अभी ये पैंट पहन लिया, उसमें बेल्ट लगा ली, आई एम केयर फ्री. बट देन यू आर नॉट अवेयर ऑफ योरसेल्फ. जैसे लोग बोलते हैं समाधि लगाना क्या जरूरत है, 2 पैक पी लो, समाधि लग गई. So there are differences of these things. You will learn about yourself more by doing that. So, and there are dress, social interactions, and ultimately they have found that depending on who is sitting next to you, your gene expression changes. ये experiment कर सकते हैं. But we don't know. We have larger resistance. Pharma industry has its own, like वो idiot वाली बात बताया ना, वो सब छुपा के रखो. As long as these things are working, आपने वो पैरासीटामॉल के लिए बोला, तो हमको कोई एक बार बोला कि गाय भी खाते थे इंडिया में लोग. ऐसे हमने कहा था वो चरक संहिता में लिखा हुआ. मैंने देखा सही में लिखा हुआ कि वो उसकी दवा बनती है. गाय बील जो उसका बछड़ा होता है छोटा सा, उसको दवा बनती है. तो उसमें किसी बीमारी के लिए बोला गया है. तो उसने कहा तो आप लोग क्यों बिना मतलब हिंदू लोग परेशान रहते हैं, गाय तो हमारे यहाँ खाते थे लोग. मैंने कहा गाय को दवा के रूप में खाते थे. अब पैरासीटामॉल का ब्रेकफास्ट तो नहीं करोगे ना. अगर आप कहो किसी की बीमारी में, किसी विकट परिस्थिति में, तो आपका हाथ पैर भी काटा जाता है. But that police doesn't register the doctor कि हाथ क्यों काट दिया. So in circumstances, some of these things happen. We are not aware. I don't have that much time to talk about all the details, and that's why I asked who's the audience. The undergraduate students may have some experience
research, so I wouldn't go into that much detail. But I do want to talk about, it looks like, oh, there it is. So we are human beings, mostly with our psyche and mind. But Sanskrit भाषा में उसको व्यष्टि कहते हैं. You know, the focus, the system that you are talking about. And then everything, society and environment is around that. And then when you reach the Brahman, that is Samasti. So those of you who have studied physics, there is this, in thermodynamics, there is called system and surrounding. So your system, whatever you want to study that system, and everything else is surrounding. And they affect each other. This is very important. They affect each other. So you cannot just hide yourself, say, okay, हमारे फादर इन लॉ बोलते थे, अरे अपना ही देख लो बहुत है. सही बात है, अच्छा भी लगता है, हाँ अपना ही देख लो ना. लेकिन वो अपना ही देखने लगते हैं लोग, फिर उसके बाद बाकी कुछ देखते नहीं. तो today we have problem in the environment. In the area that I live in, Boston area, they have lost 3 weeks of snow season. Businesses are getting affected. More importantly, this is an indication. The prediction is that in 80 years, Boston will not exist, Bombay will not exist. They will be underwater. So we have to take into account the surrounding. And you can just, those of you who are interested, use physics. Use physics, system and surrounding. And हमारे यहाँ पे वो पुराने ज़माने में ये भी लिखा हुआ था कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे. इसका मतलब नहीं कि सब बलराम सिंह घूम रहे हैं ब्रह्मांड में, ऐसा मतलब नहीं था. उसका मतलब है कि हम कनेक्टेड हैं. हमारे अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं, they are all affected by everything that we even don't know. We do astrology वाले तो stars वगैरह की बात करते हैं, but they all affect in one way or the other. It may not be astrologically. तो दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ ना कि वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है. So at least we consider this planet to be family. तो नेशनलिज्म कैनॉट बी. अभी हमारी सरकार नेशनलिस्टिक सरकार है ना यहाँ पे. ये हमारे, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन. आवर ट्रेडिशन इज इंटरनेशनलिज्म. और कैसे करते थे वो आप लोग कई क्षेत्र में है, फिलॉसफी के क्षेत्र में, हिस्ट्री के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस क्षेत्र में समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे चक्रवर्ती राजा की व्यवस्था थी. चक्रवर्ती राजा को ये नहीं था कि वो सबके ऊपर जाके राज करे, क्योंकि आप लोग मालूम है राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, राजा राम चक्रवर्ती राजा थे. लेकिन निषाद राज थोड़ी दूर पे प्रयाग के पास उनका गांव है, अभी भी गांव है वो भी वहाँ के राजा थे. तो द चक्रवर्ती राजा डजंट मीन दैट यू गो लाइक ब्रिटिश बैंड एवरीवेयर. चक्रवर्ती राजा का मतलब उनका चक्र पहले बार जगह होना चाहिए. चक्र जगने के लिए योगा करना पड़ता है. और द ओनली थिंग दे आर इंटरेस्टेड इज न्याय होनी चाहिए. जहाँ पे अन्याय होगा वहाँ पे वो लड़ेंगे बस, बाकी उसमें अधिकार नहीं करेंगे. आप देखे होंगे बाली को राम ने मारा तो वहाँ पे कोई अधिकार तो सुग्रीव को दे दिया. लंका में रावण को मारा लेकिन विभीषण को दे दिया. ऐसी हमारे यहाँ ऐसी बात होती ही नहीं. This is a great tradition that has been practiced, and even today, India went, Srimati Indira Gandhi went to Bangladesh, but she didn't occupy it. She left it. Indian army went to Sri Lanka at one time, I think, in 90s when Rajiv Gandhi was there, but we didn't occupy. See, what a great tradition that you have. And think about Europeans, they fight all the time. They're still fighting right now. All the world wars started there. They fight with each other and call it World War. Get everybody else involved in it. So you have to have this sense. अब वो सेंस कहाँ से आएगा? आयुर्वेदा एक व्यवस्था है जिसमें you have from 5 elements to Atma. It's all part of integrated. Medical science does not, today does not, although slowly they are realizing spirituality is becoming a training in the hospitals also. Mind is becoming a big thing because actually they found that 80% of diseases that are caused today, those people who go to hospitals and doctors, is because of stress. Stress कहाँ से आता है? माइंड से आता है. तो यहाँ तक कि environment में जो भारत की जो व्यवस्था है कि you have the 5 elements, ether, then you have air, then fire, then water, and then earth. Actually, if you really think about it, when I was here in Delhi, I was going to JNU. There were not as many buildings, there were not many roads. The first exploitation is road and earth element. Then अब पानी उस समय तो हम तो गांव के हैं, हम लोग जाके कुएं में पानी, बाहर के जो खेत वाली जगह होती है वहाँ पे कुएं का पानी पीते थे. अब हम घर का पानी नहीं पी पाते.
बॉटल में पानी पीना पड़ रहा है। उसके लिए एनर्जी इतनी खर्च होगी कि पोल्यूशन दिल्ली में इतना ज़्यादा हो गया है कि आई रेड ए रिपोर्ट दैट इफ यू एवरी चाइल्ड हैज एस्थमा, इज एस्थमेटिक, एंड इफ यू आस्क द डॉक्टर व्हाट इज द क्योर, लीव दिल्ली, दैट्स द क्योर, देयर इज नो अदर क्योर, बिकॉज द पोल्यूशन यहीं पे यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं उसको, आपको रहना पड़ेगा उससे। तो हमारे यहाँ गांव की व्यवस्था थी पहले जमाने में, महात्मा गांधी जी भी कहते थे, मैं गांव का रहने वाला हूँ इसलिए थोड़ा उसके लिए पहले मैं उसको आई यूज्ड टू डिटेस्ट गांव, बिकॉज आई थॉट कि नो गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि नहीं, गांव के लोग सबसे ठीक होते हैं। वहाँ पे रहने की व्यवस्था, हमारा परिवार जो 8 पीढ़ी से एक साथ रह रहा है, और आज तक मुझे गाँव में किसी ने डॉक्टर सिंह नहीं बोला। तो कोई मामा बोलता है, कोई काका बोलता है, कोई फूफा बोलता है, कोई मौसा बोलता है, अभी भी सारे रिश्तेदार हैं। समाजवाद अगर आपको देखना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सोशियोलॉजी, गो टू द विलेज। सो दिस टू सेव द एनवायरनमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ आई वांट टू मे बी शो सम डेटा। फिजिशियंस काउंसिल में भी बोल रहा था स्ट्रेस के लिए, तो I wouldn't go into detail of this. I did this study with 2 business professors, Nora Barnes and Satya Parayatam. And what we in this study, the yoga practice, was a modulator. What was the modulator? They did a study of 150 individuals. Here is the data. Yoga practice was the modulator for stress. Effect of stress will be less if you're practicing yoga. This was published, I think, in 2020, no, 2000. No, that's not the first position. My paper was published in 2021. So there has been research, and people know that yoga works. Now, how does this work? Professor Chopra was talking about, yoga is becoming more science. There are a lot of people who are studying it. There are a lot of ways to study it. And this is, I stole this, at least half of this slide from Professor R.P. Singh, JNU, because he asked me to teach his class, so he sent me some slides. So there is this term ontology, what really it is, what is reality, and epistemology, which is how do you go about it, how do you study, how do you know. So example hai, how do you know Bal Ram Singh? I mean, 2 people will introduce me, that's one way. Otherwise go to my mother, maybe she will tell better, and she's no more in this world, but many people used to go to my mother at one time. मैं बदमाशी करता था तब जाते थे उनके पास। तो but otherwise what we do, introduce to by known people who are reliable. I mean, they are professors, principals, obviously you believe. Ask my parents if you're really that much interested in it. Or these days what people normally do, go to social media. Social media, Facebook page, you will find posted something. LinkedIn, if you are interested professionally. Instagram these days becoming more popular. Most people go to Google. Right? Google is the first place, Google Guru. So if you put my name and Bal Ram Singh, you find this. I mean, some of it me. If you have seen me, there are other people who will not meet me. So actually here there is a guy, Sahid somebody, Raj, looks like Ravana. I don't know. So you will have been very confused. So my son told me that actually you can put your picture and you can see. So I said, oh, I did that. Here is my image, and here are all the people who match with me. Nobody, not even Indian. They are all Europeans, and all of them are women. So that's one way to know it. I try to do another. I had some weird, sometimes. आजकल आप लोगों ने देखा होगा, सारे लड़के दाढ़ी बढ़ा रहे, सारे पूरी दुनिया में, यही नहीं कि इंडिया में। मालूम क्यों है? मेरी थ्योरी है, ये दे आर ट्राइंग टू से यू आर नॉट इक्वल टू मी। जो इक्वालिटी ब्रिगेड चलती है ना, हम सब इक्वल हैं, लड़की लड़के सब बराबर हैं। बोलते ठीक है, दाढ़ी बढ़ा के दिखाओ। तो मैंने दाढ़ी बढ़ाया, मैंने देखा उसमें भी सारे यूरोपियन ही मिले, कोई सारे आदमी है। दाढ़ी बढ़ गई तो सब आदमी मिल रहे। अब वो महिलाओं का क्यों हुआ था? क्योंकि मेरे बाल की स्टाइल ऐसी है। अभी मैं कहीं गया था, वो बम्बई में, वहां पे बोला, मैडम आपको क्या चाहिए? एक इत्तेफाक 1-2 महिलाएं मेरे साथ हमारी तरफ देख रहे हैं। फिर इसमें मैंने अपना नाम रखा। तब देखिए, नाम से बड़ा होता है, चेहरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
अभी ऐसा नहीं कि लोग चेहरे देख के, महिलाओं का एक सबसे बड़ा गुण है कि दे कैन रीड योर फेस, लेकिन गूगल कैन नॉट रीड माय फेस। इसका मतलब हमारे यहाँ की महिलाएं, बेटियां जो हैं, उनके जो सिक्स सेंस की बात होती है, दे हैव मच बेटर. So I still have some other people with my name and picture. I put my name sometimes written Bal Ram differently. So there are changes. By this all I'm trying to show is that if you, how you want to go about things, knowing how do you want to know. This is all a very reliable thing. My name is reliable, my picture is reliable, but you're getting not the good results. So you have to find a way. And this is epistemology, from my point of view. This is an example of epistemology. In science, those of you who are interested, and you have obviously heard about Einstein's name, ontological, referring to the subject matter of scientific knowledge independent of its relationship with the perceiver. Who is watching doesn't matter. Einstein did this because he did the theory of relativity and he compared it with speed of light. Everything is in relation to speed of light. It has nothing to do with who you read it, me read it, whosoever else reads it. On the other hand, epistemological problem is when Heisenberg's uncertainty principle, which things are not certain. Sometimes you all may have this experience. Sometimes the thing right in front of you, looking for it, all around. My son says that they hide, they know how to hide. So sometimes when they want to appear, they appear. Well, basically, that's your perception. So uncertainty comes from perception, and uncertainty is the real thing. It is just going to be there, just because that's how we are. So we need to read mind, our own mind, and that comes from yoga. Yoga's definition, you will see later, is about mind. Now I used to teach a course in the University of Massachusetts, the graduate level. हमको समय बता दीजिए कितना? I think I had like half an hour, right? So I start half an hour now. I can start half an hour now. Just kidding. I'll finish in 10 minutes. So in the University of Massachusetts, when I learned yoga, the first thing, when I understood it, I practiced it, I still practice. Then the first thing I did, this is one of the things that the professors have privilege about. If I'm interested in something, I start teaching it. So I started teaching a course called Chemistry of the Mind. And I used this book written by a physicist from Australia. How do you know things? I don't have time and you can't read the whole thing here, but here is how you go about things. Describe the new in terms of the old. Because something that you know, if you describe something new, then you understand, okay, that's what it means. Express the unfamiliar terms in the familiar. Relate the abstract to some concrete. जैसे हमारे यहाँ पे ब्रह्म बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है, लेकिन किसी मूर्ति बना दी गई. Benzene is very abstract thing, even though you might think like it's very simple. Who knows benzene? इलेक्ट्रॉन को नहीं पता, किसी ने देखा नहीं, but भी बेंजीन का एक बना दिया खाका. अब सबको लगता है हाँ ये बेंजीन है, जो केमिस्ट्री पढ़ा वो उसको पता लगता है. तो sometimes you have to read. तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा के बड़े आइडल वर्शिप के खिलाफ बड़े होते हैं, और हम भी खिलाफ हैं उसके, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं. अगर मैंने कई लोगों से बोला है कि वो शंकर जी के पुजारी हों, राम के पुजारी हों, कृष्ण के पुजारी, दुर्गा जी के पुजारी, जिसके भी पुजारी हैं आप पूजा करिए, सोचते हैं कि आप वो रक्षा करेंगे. मैं आता हूँ 2 थप्पड़ लगाने, आपको पूजा करके तैयार रहिए. हमको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? कोई नहीं बचा सकता. दुर्गा जी की पूजा का मतलब दुर्गा का मतलब होता है दुर्ग, फोर्टिट्यूड. दुर्गा इज ए सिंबल ऑफ फोर्टिट्यूड. और हमारे यहाँ भारत की ऐसी नारियां हैं जो कि युद्ध किया और जीती हैं. फोर्टिट्यूड तो दुर्गा का जबरदस्त रूप है. तो लेकिन उसको दुर्गा की मूर्ति लगा के आप आरती भजन करोगे, कुछ नहीं करना चाहिए आरती भजन, बिकॉज दैट आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए. श्रद्धावान लभते ज्ञानम. That unless you believe in something, you are not going to try all the 100%. Same thing, you are doing science the same way. So anyway, I'll move on. I was talking about Heisenberg. He wrote a book, Physics and Philosophy. And there was a professor of philosophy in Yale University who wrote a foreword. And I just took some of the things. How he said how to go about things. The instruments of modern science derive from its theory and require a comprehension of that theory
for their corrective. अगर मूर्ति को आप पूजा करनी है पूरी अच्छे समझ लो मूर्ति क्यों बनी. This theory rests on philosophical as well as physical assumptions. So some philosophical concepts and then you see it and try to compare that. Now this is very important, he said. When comprehended, these philosophical assumptions generate a personal and social mentality and behavior quite different from, at points incompatible with the family, caste and tribally centered mentality of native Asian, Middle Eastern and African people. It basically says that the science that we have today, the Western science, it has its own philosophy, it has its mindset, its own condition, environment. They are good, we don't need to criticize that. But when you want to use it, don't want to use that. You want to use your own. You want to, जैसे भी हम अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आपको कोई भी भोजन पसंद है. अब आजकल खाना वाना बनाने में बड़ी परेशानी होती है. तो why? अभी we know कि you need 37 grams of protein every day. Oh, I can extract that. I am a chemist. I know how to give you 37 grams of protein. कौन सी चाहिए? चिकन वाली चाहिए कि मटन वाली चाहिए? जो चाहिए I can give you. How about I just inject it? चूल्हा चक्की के चक्कर ही नहीं. You will die at the end of the day because allergy होती है. तो ऐसा नहीं, just because you have protein and you want it and you need protein doesn't mean you take somebody else's protein and try to put in yourself. You have to digest it. Same thing is true for all the words that we speak, ideas that we speak. Whatever I am saying, you need to digest it. Think about it and then see how it fits with you, and that will make you a wise person. You will learn something from it. But there are two terms: learned, those who learn; educated, who are educated. I have never heard anything bad about learned people. Mark Twain said that my education is the only hurdle in my learning. Mark Twain said, he spent time in India, by the way. बहुत सारे ग्रेट लोग इंडिया पहुंच जाते हैं किसी न किसी तरह से. आप लोग यहाँ पैदा हुए हैं, आपके तो सौभाग्य. Why? Because 6 seasons only इंडिया में होता है. There are 68,000 जाति, जिसको कास्ट कहते हैं, 68,000 इंडिया में, और लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे. आपके यहाँ 23 लैंग्वेज ऑफिशियली लैंग्वेजेस हैं. उस यूरोप में सारी की वो स्क्रिप्ट एक ही है, सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट रशियन. They keep fighting all the time. हमारे यहाँ सारी की स्क्रिप्ट अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता. You learn from each other. If you are learning, you will never have problem. हमारे चाइनीज स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी वो अमेरिकन लोग गाली वाली कर देते हैं. तो एक आध बार हमसे बोली, एक चाइनीज लड़की थी, बोली they say bad things to us. I said उसको बोलो कि can you please spell it out. तो उसका ये पहले तो हो जाएगा कि तुमने समझा नहीं उसने गाली क्या बोली. दूसरा कि एटलीस्ट यू विल लर्न कि वो गाली होती क्या है. सो अपन गाली में भी सीख सकते हैं. ये मेरा कहने का मतलब. हमारे यहाँ की परंपरा तो ऐसा है कि दुश्मन के साथ भी न्याय करते हैं. हमारे यहाँ की परंपरा दुश्मन के साथ भी न्याय करते हैं. अगर आपके पास शस्त्र नहीं है तो शस्त्र लो, तब लड़ेंगे. ये बटन दबा के किसी घर उड़ाने वाली व्यवस्था हमारे यहाँ की नहीं है. तो देयर आर, एनीवे दिस इज जस्ट टू शो यू. और I'm a scientist, that's why I'm talking about science. But actually Indian government has a constitution, Article 51A says fundamental duties. It says it shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper. So I'm very well within my area, Indian constitution, to raise everything scientifically. Everything. That's why political science, social science, even economic science, everything is becoming science. एंड हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत पहले देश की दुनिया में किसी के और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं. बाकी लोग भगवान के नाम पे करते हैं. हमारे यहाँ पे है साइंटिफिक टेम्पर. यू कैन क्वेश्चन एवरीथिंग. यू कैन क्वेश्चन योर पेरेंट्स. उद्दालक और श्वेत केतु की कहानी है, जिसने बृहदारण्यक उपनिषद लिखा है, और सबसे बड़ा उपनिषद है, कि बाप बेटे में तनाव ही रहता था जिंदगी भर. एक दूसरे का टेस्ट ही करते रहते, लेकिन उससे ज्ञान हुआ. इतना बड़ा ज्ञान, उसकी बहुत अच्छी कहानी है. आई लर्न वेरी रिसेंटली. तो हमारे यहाँ जो कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब है अपने कर्तव्य को समझिए. इसमें आई कैन गो ऑन विद दैट वर्ड वेरी वेरी लॉन्ग. आई हैव डन सम रिसर्च ऑन इट. और फिलोसफी एज द काज ऑफ अनसाइंटिफिक कॉन्फ्लिक्ट, जो कि यूरोपियन के होते हैं. तो यू कैन से लिटरेचर इज फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट कार्ल मार्क्स ग्रेट फिलोसफी, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Samuel Huntington, Harvard professor, recently wrote about the world war on religion. अभी इंटेलेक्चुअल लोग ऐसी बातें बोलते हैं तो लोग सोचते हैं हाँ सही होगा.
बिना मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है. He wrote in 1997. उसके बाद खूब लड़ाई हो रही है. All religious wars are happening. Sometimes we have so much impact on people because they think, oh, Professor so and so is saying such a thing. Maybe this is true. I don't know anything. But now they become aware of it. So there are unscientific conflict create कर देते हैं. इससे फिलासफी, भारत की बातें जो है दर्शन की हैं. समय देख लेता हूँ क्योंकि कभी sometimes I get carried away. There are two ways to learn anything. Talking about epistemology, one is called deductive logic, one is called inductive logic. Deductive logic is top down, and inductive logic is bottom up. Whatever you observe, then you see the pattern, and then you see, ask some questions, research questions, and then you develop a theory. The other one is empirical theory, and then now they have hypothesis. Sometimes they give you the orders that this is what you have to do, and that's called Nigam Shastra, हमारे यहाँ holy books. That includes Veda. Maybe some of you are here. Professor Sashi Tiwari and I many times have conflict about it. Because वेद में लिखा हो उसको हम नहीं काट सकते. क्यों नहीं काट सकते? वेद लिखा ही से क्या? सभी लोग क्वेश्चन पूछ के तो किए थे. लेकिन अभी आजकल के लोग वेद में लिखा हुआ, उसी तरह होली कुरान में लिखा हुआ नहीं काट सकते, बाइबल में लिखा नहीं काट सकते. क्यों नहीं काट सकते? जिन लोगों ने ये होली कुरान और वेद और बाइबल पढ़ा तो वो सब तो उस समय की जो whosoever was the शासक जो होते थे उनके खिलाफ ही करते थे. Jesus Christ rose up against Roman Empire. So Prophet Muhammad rose up against whatever the things were at that time. हमारे वैदिक लोग भी राजा के खिलाफ जब मन में आता बोलते थे. वो अपनी बातें मानते थे, उनसे राजा के यहाँ रहना ही नहीं हमको, आपके यहाँ हम अपना अलग से रहेंगे. तो the knowledge comes with the freedom. You have to be free, and to know yourself you have to know yourself to become free. अब उसका एक नतीजा ये हम दिखा रहे हैं जो अभी आज का 7 दिन है, आज का ट्यूसडे है ना. ट्यूसडे nobody knows why Tuesday today. हमारे यहाँ तो प्रकृति शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता था, चंद्रमा देख के आप बात कर सकते हैं. मेरी माँ को घड़ी नहीं पहनती थी, लेकिन पूछी, मेरी बेटी अमेरिका में थी तो वो गई थी वहाँ, उनका टेस्ट लिया था कि कितना बज रहा है दादी माँ, तो बोलेंगे 12:30 बज रहा है. बोलेंगे 5 मिनट के अगल बगल रहता था. तो आप अगर प्रकृति से जुड़े हुए हैं then you get all this. ये जो 7 days जो है वो तो बाइबल के लिखा हुआ, जेनेसिस में लिखा हुआ. Let there be light, then there was light, and that's called Sunday. Let there be water, then there was a water, and that's called Monday. I'm making it very simple. It's something like that. But ये हमारे यहाँ पे योग और आयुर्वेद ये सारी चीजें जो हैं वो आगम ज्ञान है, आपका जो अनुभव है उसके हिसाब से. इसलिए हमारे यहाँ प्रजा को सबसे बड़ा माना जाता है. राम, मैं अयोध्या से आता हूँ, राम को धोबी की बात सुननी पड़ी. राम को एक बार एक कुत्ते की बात भी सुननी पड़ी. कुत्ते के साथ अन्याय हुआ था. Then he had to listen to that also. I won't go into that table, but anyway, as a university or Vishwavidyalaya or whatever we have, studies, Gurukul, we combine these and we are open to this. And that's the way to do the methodology. Now, scientific truth is something, I mean, you know, this is middle school, the first definition, the middle school definition, you organize things. The second one, Newtonian definition. When you say that this is true, then you should try to prove that this is not true. In what condition this will not be true. That's why those of you who have done experiments, we run controls. जो हम clinical trial करते हैं उसमें हम वो placebo effect देखते हैं. Sometimes actually remdesivir worked out, placebo or they're working better than the remdesivir. But वो कंपनी वाले खूब बेच रहे थे. हमारे हम भी कंपनी के साथ काम करते थे, उसने खूब पैसा कमाया रेमडेसिविर बेच के, जबकि उसका नुकसान हो रहा था लोगों को. Anyway, we believe in objective science. We want to have science that is objective, the way it is. Why? Because we do not want people to be biased. Company wale, you told some companies I have. When I have talked about as a company person, I don't talk like a professor. I talk like, whatever. I have to listen, I have to see their expression, I have to see what their words they're talking about. भी हमको किसी ने बिजनेस के, अगर इसमें कुछ स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स कॉमर्स के, किसी ने बोला हमको एक बार कि when you are sitting in a business meeting and Professor Chopra says that today is Tuesday and if I am the other side of, then I have to say what do I gain by saying today is Tuesday, because there is a purpose in whatever you say. Everything has a meaning. So that's the business. That's how we do. Because we are biased. We are looking for our own thing. But ज्ञान जो है वो बायस से नहीं आता है, वो ऑब्जेक्टिव वन वे.
objective is one way, but objective can be biased. I have worked with several companies. They are not interested in everything I tell them, everything that I know about their product. They want to know only thing that FDA wants. बाकी बोलते हैं अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए। तो अनबायस कैसे होगा व्यक्ति? वो when it become very scientific. जैसे कई लोग बोलते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। हमको लोग बोले कि देखो कोई अप्रिय चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए किसी को, उससे चुप रहो। नहीं, उसका असली मतलब है कि सत्यम ब्रूयात मतलब सत्य बोलने का अभ्यास करो, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलने का अभ्यास करो, फिर दोनों को मिला लो। तो कोई भी सत्य आप प्रिय बोल ही नहीं सकते, आपकी आदत पड़ गई। एंड दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। यू नीड टू फाइंड वे टू आर्टिकुलेट व्हाटएवर यू वांट। इवन आपको बोलना है मैं पागल हूँ, बोलिए आपकी बात पूरा आउट ऑफ माई सेंस इज गोइंग, ऐसा बोलेंगे तो मुझे नहीं लगेगा आप पागल बोल रहे हैं। इसलिए मेरे बियॉन्ड माई सेंसेस, मैं सोचूंगा तो मैं बड़ा आदमी हूँ, हमारी इनके समझ में नहीं आ रहा हमारी बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ। तो देयर इज वे ऑफ आर्टिकुलेशन, ऐसा कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ लाइफ का होलिस्टिक गोल जो है दैट आल्सो इंक्लूड्स हेल्थ। फ्रीडम सबको चाहिए, इंडिपेंडेंस सबको चाहिए, इक्वालिटी सबको चाहिए। आई वांट टू शो यू ये कैसे होता है। फ्रीडम के लिए आपको पहले तो मन को शांत करना पड़ता है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति को निरोध का मतलब वैसे लोग बोलते हैं कंट्रोल करो, ये नहीं कभी चॉकलेट देखा खाने का मन कर रहा लेकिन नहीं आंख बंद कर देते, इसको नहीं कहते निरोध। निरोध इज वेरी साइंटिफिक। रोध को रेजिस्टेंस कहते हैं, निरोध की जहाँ पे रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन मैं इसमें और जोड़ता हूँ जहाँ पे रेजिस्टेंस की आवश्यकता ही ना हो। आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर रेजिस्टेंस की बात ही नहीं है। तो माइंड को उस तरह से स्थिर करना पड़ता है। चित्त वृत्ति को माइंड कहते हैं, वैसे चित्त है चेतना में। आपकी चेतना में सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन माइंड इज वन फर्स्ट रीडर। देन यू हैव टू डू स्वाध्याय। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। ये पातंजलि योग सूत्र के दोनों पहला वाला पहले चैप्टर का सेकंड श्लोक है, दूसरा वाला दूसरे चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। लोग बोलते हैं स्वाध्याय, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे संस्कृत के मित्र लोग बोलते हैं कि अपने बैठ के अपनी किताब अपने आप पढ़ो, उसको कहते हैं स्वाध्याय। नहीं, स्वाध्याय का मतलब अपने को अध्ययन करो। स्वाध्याय किताब वाली बात नहीं है यहाँ पे, अपने को अध्ययन। और कब करेंगे? तपः मतलब संघर्ष, ऑस्टेरिटीज, परेशानी में, तब अपने को अध्ययन करो। अभी एग्जाम आ रहा है तो अपने को अध्ययन भी करो। वो अध्ययन कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन देखो हमारी स्थिति क्या है। आप अपने फीडबैक मैकेनिज्म है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ यू विल बिकम बेटर। दैट्स व्हाट योगा इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। यू पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग टू योरसेल्फ। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर जो है, अभी इसके बारे में थोड़ा बोलेंगे, अभी आने वाला है वो। ईश्वर क्या होता है? लोग सोचते हैं भगवान है ईश्वर। दूसरा यह है स्वधर्म से ही हमको इंडिपेंडेंस मिलता है। हम अपने को जानते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, वो हमारा इंडिपेंडेंस है। हमारा इंडिपेंडेंस नहीं कि कोई वैसे जिसको आज़ादी कहते हैं ना, आज़ादी का मैंने वो अपने पुस्तक में लिखा हुआ आज़ादी का मधुशाला में। आज़ादी का मतलब होता है पीटना। आज़ादी का मतलब पीटने से आपको नहीं पीटेंगे, इसको कहते हैं आज़ादी। लेकिन जो स्वतंत्रता है वो हमारी अपनी होती है, हमारा अपना तंत्र होना चाहिए, उसको आज़ादी नहीं कहेंगे। तो द वे यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। ये भगवत गीता से कहा गया, स्वधर्मे निधनम श्रेयस पर धर्मो भयावह। If you are better off dying if you cannot follow your own nature, and that's many people have done many examples in this world, in India particularly. Then you will come with natural karma, natural action, the karma without any attachment, because you know yourself. It doesn't matter. जैसे हम इसको अभी पीछे मैंने बोला था, कर्तव्य भाव होना चाहिए। कर्तव्य भाव यहाँ से आता है। माता अपने बच्चे की सेवा करती है, नहीं सोचती है ये तो बच्चा है, इसको हमारी सेवा करनी चाहिए, ये सब नहीं। वो आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनको अच्छा बनाते हैं, सेवा भाव, वो भी सेवा है। ये नहीं कह रहे हम तो प्रोफेसर, चलो हमारा पैर वैर छुओ तुम लोग और हम तुमको कुछ बड़ी बात बता देंगे, ऐसा नहीं। हम आपकी सेवा करते हैं, इसमें हमारा बड़प्पन है, हमारे अंदर ये भाव है, हमारे अंदर ये शक्ति है, सेवा करें। तो वो हमारे नेचुरल एक्शन। अगर इफ यू आर नेचुरली ए टीचर यू विल बी लुकिंग फॉर पीपल। पहले लोग सोचते थे कौन मिले कि हम उसको कुछ बताएं, और एक योग्य व्यक्ति कोई मिले, इस तरह के। और फिर जब आप अपने को जान गए, अपना नेचुरल एक्शन करने लगते हैं और अपनी चित्त वृत्ति को स्टिल कर लेते हैं,
तब जो आप होते हैं वो अपने में होते हैं, स्वस्थ, अपने में स्थापित हो जाते हैं, और उसको कहते हैं स्वास्थ्य, उसी को कहते हैं हेल्थ। तो इस भाव से, और जब आप हेल्दी हैं, आप भी हेल्दी, हम भी हेल्दी, सारे लोग बराबर हो गए। अब आपका मन किसी तरह से विचलित हुआ है, हमको देखे बिगड़ गए, तो हम भी बिगड़ गए, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम ऑब्वियसली स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ ये भाव जो है योग के विधि से आ सकता है, और हम इसको जान सकते हैं। तो ये लोग करते हैं। मेरी बेटी है उसमें जो फोटो में है, वो इसे प्रोफेसर है वहाँ बकोनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी भी योगा करती है। वो आके यहाँ पे सीखी हरिद्वार में, ऋषिकेश में, मई के महीने में सीखी। तो सोच लीजिए ऐसी उसी नहीं था, तो एटलीस्ट ही हैज सम टेस्ट ऑफ इंडिया, समटाइम्स वी कैन कम्युनिकेट दैट वे। तो मैं ये ईश्वर की, ये तो खैर तो उसका मैंने बताया, ये ईश्वर का भी होना चाहिए सारी साइंटिफिक। आई एम गोइंग टू स्किप समथिंग बिकॉज आई थिंक आई हैव टेकन मोर टाइम, बट ये मैं एक चीज़ ये कहना चाहता था कि योग पे और रिलीजन पे हमारे और आइंस्टाइन के बीच थोड़े डिफरेंसेस हैं, नॉट द डिफरेंसेस ऑफ ओनली कम्युनिकेशन। वो द वे साइंस इज लुक्ड एट टुडे इज टाइम एंड कंसंट्रेशन। एंड मैं ये दिखाना चाहता था कि योग जो करते हैं उसका भी टाइम, जब किसी चीज़ पे टाइम का फर्क पड़ता है उसको साइंस मानते हैं। और ये वहाँ प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुआ है पेपर कि जो लोग 15,000 घंटे योग किए होते हैं, और दे हैव डन फॉर 30,000 और 45,000, you can see there is a correlation in a brain synchrony. So yoga actually is real, it's not just only ऊपर से सोच रहे हैं, अगर लेकिन you have to do it long, consistent, उस तरह। तो योगा can be a science। और जो ये मैं बात कह रहा था, ये लास्ट में, this will be my last slide, I wouldn't go too far। तो चित्तवृत्ति, तो तब हमने संघर्ष बताया, स्वाध्याय, स्वधर्म, फिर तटस्थ भाव से देखना है, और उसको हमको स्वस्थ, हम तभी स्वस्थ होते हैं। उसके आगे की जो कहानी है ये है कि हम तब निष्काम कर्म करते हैं तो सब मान लेते हैं। भगवान कृष्ण ने यही तो अर्जुन को यही दिया था कि निष्काम करें, किसी चीज़ की इच्छा नहीं, तनख्वाह की भी इच्छा नहीं करो, कर्म करना है तो बाकी सब हो जाएगा। फिर हमारे अंदर समानता आती है, समान अधिकार मिलते हैं हमको, उपयुक्त फल हम जो मिलने, हमने जो कर्म किया हमको मिलने वाले। और तब वहाँ पे हमारे यहाँ पे कर्मंडे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की कहानी हमको समझ में आती है। ऐसे नहीं चिल्लाने से नहीं आती है। और जो मैं इसमें कर्तव्य से, या दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट टू। ईश्वर कौन है? अकॉर्डिंग टू पातंजलि योग सूत्र 1.2 पहले चैप्टर का 24वां सूत्र है, क्लेश कर्म विपाकाशाय अपरा निष्ठा पुरुष विशेषा ईश्वर। ईश्वर की परिभाषा दे दी गई है, एंड यू कैन बी इट। कौन होगा? दो जिसके अंदर राग द्वेष और पाप पुण्य से परे हो जाता है। आपके अंदर राग द्वेष होना नहीं चाहिए, और आपको ये नहीं सोचना है हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, ऐसे कुछ। आप जब अपने कर्तव्य भाव में जब आ जाते हैं, चाहे मैं एज ए प्रोफेसर, somebody is a mother, somebody is a daughter, somebody is a brother, whatever, a citizen, प्राइम मिनिस्टर, जब कर्तव्य भाव से करता है उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं। माँ कर्तव्य भाव से करती है तो बच्चे इसको नहीं उम्मीद करती कि हमको ये मिलेगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं। उसको कोई अगर बच्चा उसके ऊपर टट्टी भी कर देता है उसको बुरा नहीं लगता, ठीक है ऐसा होता है, क्योंकि उसके कर्तव्य भाव। तो कर्तव्य भाव की जो बात होती है भारत की सबसे बड़ी परंपरा है मुझे लगता है, और उसके हिसाब से अगर हम ज्ञान को अप्रोच करें तो दैट विल बी द बेस्ट। आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, although I have few more slides, it's not needed because there was some time for interaction. Thank you so much.